Ma'am, shall we start the session now? Uh, with the permission of principal, ma'am, we would like to start the session. Please start. Thank you so much, ma'am. Over to Nisha. Thank you, ma'am. A very warm good evening to one and all present here. I am Nisha Mangla, NSS volunteer, student of BA program second year. I welcome you all on the behalf of NSS of Aditi Mahavidyalaya on Martyr's Day, Shaheed Divas 2022. We shall begin the day by prayer from our volunteer. I would like NSS team to play Vaibhav Janto. Ma'am, not audible. Just a second. वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान माने रे वैष्णव जन तो तेने कही अज पीड़ पराई जाने रे सकल लोग मास चहुरे बंदे निंदा ना करे कि रे बाझ काझ मन निश्चय राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरी कही थे पीड़ पराई जानी रे समुद्र सीने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मात रे जिह्वा थकी आसक्त न बोले पर धन नभ चले हाथ रे
वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिला मन मारे। राम नाम सो ताड़ी रे लागे, सकड़ तीरथ लेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। लोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बड़े नर संयुत दर्शन करता, कुल एको तेरा तार्या रे। वैष्णव जन को तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे। Really full of humanity, and this will to help others. Moving ahead, Professor Mamta Sharma ma'am, Dr. Mali Devi Savaria ma'am, and all the dedicated volunteers, we are extremely glad to welcome you all. As we all know, Mahatma Gandhi was an inspiration for India and us. On 30th January, we lost Mahatma Gandhi, who inspired us through his life and works. Mahatma Gandhi, popularly known as Bapu, had led many freedom movements through non-violence. Remembering him today, we all pay homage to Gandhiji. You will keep inspiring us always. So now, I would like to call our beloved Professor Mamta Sharma ma'am for inauguration of the event. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Nisha. I'm just trying to share something if it is possible. I'll just go to just a minute. Is this visible? Please let me know. No, ma'am. No, ma'am, it is not visible. Uh, This video is not visible. no, ma'am. What we can do is आप मुझे भेज दीजिए वीडियो. I can play it. I'll do that. Yes. Will take some time. Just ma'am is No, sending the just a video. moment. Yes, ma'am. Uh, Yes, ma'am. Please check. I've already sent. Have you received? Yes, ma'am. I have received. I'm just sharing it. Please do. जगाओ ना बापू को नींद आ गई है. जगाओ ना बापू को नींद आ गई है. This was a song sung by Shameen Karahani. So I would like all of you to listen to this. It was composed on 30th of January only in 1948. So please, Mali, start sharing if it is possible.
And what a nice theme that we are working today on. Postcard to Gandhiji. So, the situation in which all of us are there, we would be writing to about that to Gandhiji. Beautiful theme. So, I think my greetings to all of you on this occasion. And Mali, please play the song. Today you have changed the platform. उठ के आए हैं बज़ में दुआ से वतन के लिए लौ लगा के खुदा से टपकती है रूहानियत सी फजा से चली आती है राम की धुन हवा से दुखी आत्मा शांति पा गई है जगाओ न बापू को नींद आ गई है ये घेरे हैं क्यों रोने वालों की टोली खुदारा सुनाओ ना मनहूस बोली भला कौन मारेगा बापू को गोली कोई बाप के खून से खेलेगा होली अब बस मादरे हिंद शर्मा गई है जगाओ ना बापू को नींद आ गई है मोहब्बत के झंडे को गाड़ा है उसने चमन किसके दिल का उजाड़ा है उसने गिरेबान अपना ही फाड़ा है उसने किसी का भला क्या बिगाड़ा है उसने उसे तो अदा अम्न की भा गई है जगाओ ना बापू को नींद आ गई है अभी उठ के खुद वो बिठाएगा सबको लतीफे सुनाकर हंसाएगा सबको
सियासत के नुस्खे बताएगा सबको, नई रोशनी वो दिखाएगा सबको, दिलों पर सियाही सी क्यों छा गई है, जगाओ न बापू को, नींद आ गई है। वो सोएगा क्यों जो है सबको जगाता, कभी मीठा सपना नहीं उसको भाता, वो आजाद भारत का है जन्मदाता, उठेगा न आंसू बहा देश माता, उदासी ये क्यों बाल बिखरा गई है, जगाओ न बापू को, नींद आ गई है। वो हक के लिए तन के अड़ जाने वाला, निशान की तरह रण में गड़ जाने वाला, निहत्था हुकूमत से लड़ जाने वाला, बसाने की धुन में उजड़ जाने वाला, बिना जुल्म की जिससे थर्रा गई है, जगाओ न बापू को, नींद आ गई है। वो उपवास वाला, वो उपकार वाला, वो आदर्श वाला, वो आधार वाला, वो अखलाक वाला, वो किरदार वाला, वो माझी अहिंसा की पतवार वाला, लगन जिसकी साहिल का सुख पा गई है, जगाओ न बापू को, नींद आ गई है। कोई उसके खून से न दामन भरेगा, बड़ा बोझ है सिर पर क्यों कर धरेगा, जरा उसका दुश्मन जो गुल भी करेगा, अमर है अमर वो भला क्या मरेगा, हयात उसकी खुद मौत पर छा गई है, जगाओ न बापू को, नींद आ गई है। गांधी को मारकर भी गोडसे की विचारधारा नहीं जीत सकती अगर हम मिलकर उसका मुकाबला करें। आपने अभी सुना शमीम कराहनी का गीत जगाओ न बापू को नींद आ गई है। इसे गाया है पीस विजिल की शीरीन ने। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। कवि शमीम कराहनी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कवि थे। ये गीत उन्होंने 30 जनवरी 1948 को लिखा, जिस दिन गांधी की हत्या हुई। याद रहे, शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है।
इस गीत को और इस गीत के मैसेज को दूर तक फैलाएं। फिर से याद दिलाते हैं आपको कि शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है। Wasn't that beautiful, my That dear was students? indeed, yes, ma'am. This was indeed, you have filled our moments with those historical journeys. Very beautiful, ma'am. बच्चों को झलक दिखाए, इतने खूबसूरत वो मुखड़ा उनका, तो मैंने उनको बोला आप यहीं खड़े रहना, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। Very beautiful. माली आप कंटिन्यू करवाइए। Yes, ma'am. आप लोग सभी स्टूडेंट्स अपने रिएक्शंस और अपने मैसेजेस हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अनम्यूट करके आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपनी भावनाएं। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है जब हम सारे उन मैसेजेस को याद कर रहे हैं जो गांधी जी ने हमें दिए थे, और आज के यूथ, आज के जनरेशन को, हम सबको उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है। With this spirit, I would hand over the mic to ma'am. Ma'am, please. Mali, after listening to this song, I have nothing to add. The idea is to spread this message of Gandhi wide and across. And my dear students, अगर हम इनमें से एक भी चीज अपने अंदर डालेंगे, हमें आगे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी करें पैशन से करें। आपने अगर उस स्लाइड्स में देखा होगा तो ये लिखा था कि गांधी जी बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप जो भी करें खूब शिद्दत से करें, खूब मेहनत से करें, और सक्सेस आपको मिलेगी ही, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। Very true, ma'am. Thanks for your inspirational words, ma'am. Actually, कहीं ना कहीं गांधी जी जो हैं वो उस समय पर भी हम सबकी रोशनी बने रहे, जिस समय पर हमारा समाज, हमारे आसपास के सभी व्यक्ति जो थे, कहीं ना कहीं हिंसात्मक दंगों में भी, या कहीं ना कहीं उन सारे क्षणों में जब मानवता अपना चरित्र खो बैठी थी, गांधी जी के होने से वो रोशनी जो थी वो हम सबको मिलती रही, और आज उसी रोशनी को हम सब आगे लेकर जाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, मैम। ओवर टू निशा। Thank you so much, ma'am. That was indeed informative and extremely motivating. Now, I would like to invite lovely Program Officer Dr. Mali Devi Savaria, ma'am, to introduce. Over to you, ma'am. I guess, Nisha, as we have already said, and ma'am has already set such a foundation that humanity, non-violence, truth, everything that Gandhiji has given us are something which we shall never lose. And these are the major foundations on which our nation is, our nation is resting upon. And all of you are our Aditiyans, our NSS volunteers who are going to spread this message, along with Principal Ma'am, the way she just shared it. एक व्यक्ति के जाने से पूरा समाज में जिस तरह का अंधेरा उस समय छाया था, और सब आप देखिए, एक किताब है इन दी फ्रीडम्स नाइट, शेड ऑफ फ्रीडम। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनीस किदवई जो थी, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। आप देखेंगे उस किताब में किस तरह से उन्होंने अपनी रोशनी बापू में पाई थी, और उनके वो अपने जीवन के अंधेरे को लेकर गांधी जी के पास गई थी, और उन्होंने कहा था कि इस समय पर जब सब कुछ इतना आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं किस तरह से अपनी रोशनी ढूंढूं, और क्या है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आज इतना सब कुछ हमारे आसपास घट रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गांधी जी ने उनसे कहा था कि तुम्हारी रोशनी तुम खुद हो, और ये देखो कि आज इतना सब कुछ जो हो रहा है उसमें तुम कहाँ मानवता को साबित कर सकती हो। देन शी वर्कड हार्ड। वो हुमायूं टॉम्ब में जो रिफ्यूजी कैंप था वहां उन्होंने बहुत काम किया, पार्टीशन में जो रिफ्यूजीज थे उनके साथ बहुत हार्ड वर्क किया। सो
Everything which Principal Ma'am has just said, it has truth in it. It is not just words. It is the hard work, persistence, which is the key. Or I'm sure, my dear students, my dear volunteers, you all are going to take Principal Ma'am's message ahead. Thank you, everyone. Over to Nisha. Sure, ma'am, we will do. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now, I would like to invite Miss Yashika for speech. Thank you, Nisha. Good evening, everyone. I am Yashika Pawar from BA program third year. आज शहीद दिवस के मौके पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। अ, बापू तेरा हिंदुस्तान, याद रखे तेरी पहचान, नोटों में है तेरी फोटो, वोटों में है तेरा नाम। तू भारत की गौरव गाथा, तू भारत का है अभिमान, बन भारत का भाग्य विधाता, बना स्वतंत्रता की तू पहचान। भारत में 7 दिनों को शहीद दिवस राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, उनका उनका नाम उन लोगों के सम्मान में रखा गया है जिन्हें राष्ट्र के लिए शहीद के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय इतिहास में 23 जनवरी के दिन को एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 23 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। यही कारण था कि देश में 23 जनवरी यानी महात्मा गांधी के पुण्य तिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई सभाएं आयोजित की जाती है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के कई गणमान्य नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी जाते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू निशा। Thank you so much, Yashika. It was wonderful. Now, going ahead with this, I would like to request to present the postcards of our talented and lovely NSS volunteers. Thank you so much, Nisha. I would like to ask, do we have Roshni with us? Roshni, please raise your hand. Roshni Singh Kushwaha, are you there? I guess Roshni is not there, but I'm sharing the postcards. यशिका, क्या आप रीड कर सकते हो ये? हमारे समक्ष अभी रोशनी नहीं है। Yes, ma'am, sure. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Gandhi Shatabdi 1869 to 1969. The main reason why I inspired by Gandhi ji is his philosophy of non-violence. Here, reason why I like Gandhi ji: forgiveness and always truthfulness, living in the present and learning from mistakes. I feel Gandhi ji's ray of knowledge. He always guide us. थैंक यू सो मच यशिका। बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से आपने शेयर किया है फॉरगिवनेस एंड ऑलवेज, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज इतने मोनोटोनस लाइफ में कहीं ना कहीं हम माफ करना भी भूल गए हैं। हम सब में आप लोग सब मुझसे, आई डोंट नो, आई वुड रिक्वेस्ट एनएसएस वॉलंटियर्स टू प्लीज रिस्पॉन्ड थ्रू देयर रिएक्शंस इन द चैट बॉक्स। एम आई राइट कि आज हम लोग बहुत कम है, हम में वो माफ करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। हम छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराज हो जाते हैं सब।
Yes, I can see the messages. Yes, very true. हम लोग कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस जो है वो गांधी जी के जितने कर्म रहे हैं, आप देखिए उनके जितने लिखे हुए लेख हैं, उनकी चिट्ठियां पढ़िए, उनके लेटर्स पढ़िए, आपको देखने को मिलेगा कि वो फॉरगिवनेस को कितने डीपली समझ सकते थे और किस तरह से उन्होंने उसको प्रैक्टिस भी किया है. सो यस, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, सच अपने अंदर ला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही एक रास्ता है माय डियर वॉलंटियर्स, जो कि हमें अपने अर्थ के लिए, अपने ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे आसपास के सोसाइटी के लिए, हमारे इस पूरे यूनिवर्स के लिए, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो ट्रूथफुलनेस इज द राइट वे. Then living in the present, learning from mistakes, very important. Thank you, Roshni, for sharing your postcard with us. You are not there in the meeting, but yes, thank you for sharing it with us. The next postcard, which is there, is by Simran. Simran, are you there, beta? Raise your hand. Yes, ma'am. One Simran is here. Okay, just a second. Let me. Simran, if you are there, please raise your hand. Please raise your hand. मैम, जिन बच्चों के कार्ड्स आए हैं तो उनका नाम लेके कोई एक रीड कर दे तो ये भी ठीक रहेगा. Okay. So I would request Bushra to please read this. Okay, ma'am. सिमरन एनएसएस वॉलंटियर सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम. इनके तरफ से बापूजी के लिए आपका शुक्रिया हमें स्वतंत्र जीवन देने के लिए. पूज्य बापूजी, सादर प्रणाम. भले ही आप यहाँ नहीं हैं, परंतु आज भी अनेक दिलों में राज करते हैं. आपने सदैव सत्य, ईमानदारी व धर्मों का आदर करना सिखाया. हमारे भारत देश की आजादी के लिए आपने व अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया. आपका ये बलिदान सदैव याद रहेगा. आपने सदैव सत्य का साथ दिया. आप एक महान नेता के रूप में किसी भगवान से कम नहीं थे. धन्यवाद. बहुत ही सुंदर है. बहुत ही सुंदर. Thank you so much, Bushra, for reading Simran's postcard to us. Moving ahead. Yes. Uh, this is the postcard by Nidhi. Nidhi, are you there? निधि, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को और बात कर सकते हो. निधि. Okay, I guess I would request Yashika to please read this postcard by Nidhi. तो निधि कुमारी ने कहा है, गांधी जी की कही गई कुछ बातें जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है. खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खोना. The best way to find yourself is to lose yourself in the services of others. Thank you, Nidhi. Thank you, Yashika, for reading it. Nidhi, very truly, you have said, be the change you want to see in the world.
फॉर एग्जाम्पल हम सब जो है कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, कहते हो तुम लोग सब, बट उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टार्ट हमें खुद से करनी चाहिए। यस, तो वही गांधी जी ने भी हमें प्रेरणा दी है कि अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले वो बदलाव का एक्सपीरियंस जो है आप अपनी आत्मा से कीजिए, अपने सत्य से कीजिए, अपनी बोली, अपनी अपनी पहचान में, अपने एक्सपीरियंसेस में, अपने एक्शंस में वो बदलाव लाइए। तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे कि उस बदलाव का क्या महत्व है और वो क्यों जरूरी है। Thank you, Nidhi, for reminding us this. Thank you so much. Next postcard is by Mona Kumari. Mona, are you there? Yes, ma'am. Mona is here. Yes, I'm just making her the presenter. Just a second. Mona is there. Got her. Yeah. Over to Mona. Yeah, am I audible, ma'am? Yes, Mona, you are. A very good evening, ma'am. सो मैम मैं रीड कर रही हूँ। आदरणीय बापू, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज मुझे ये पत्र लिखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि अदिति महाविद्यालय की वजह से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी बातों को बता सकूं, कि मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ मेरे बापू ने अपनी जान गंवा दी अपने देश को आजाद कराने में। आज मुझे ये लिखते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि लोग पहले की भांति हिंसा को छोड़ अहिंसा पे उतरने लगे हैं। लोग बुरा सुनने में, बुरा देखने में और बुरा बोलने में आनंद लेने लगे हैं। इस देश को फिर एक बापू की जरूरत है जो उन्हें सही राह पे ला सके और एकता सिखा सके। करो कुछ ऐसा काम जिससे हो देश का नाम, कर बापू को याद, कुछ करे नेक काम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मोना। मोना, मैं चाहूंगी कि तुम थोड़ा सा जो तुमने कहा है उस पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करो, क्योंकि हम चाहेंगे तुम्हें सुनना। या मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैम मैं बस लोगों को मैम मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, चाहे मैं बताना चाहती हूँ कि है ना, लोग पहले ऐसे नहीं थे कि मतलब लोग जब दूसरे को प्रॉब्लम में देखते थे तो मतलब लोग आगे की ओर बढ़ते थे कि उनकी हम मदद करें, उन्हें हम हेल्प करें। बट मैम आज के डेट पे क्या हो गया है कि लोग दूसरों के बारे में बुराइयां करने में ज्यादा आनंद लेते हैं। लोग होते हैं कि नहीं यार, उसकी चुगलियां करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ सीखना चाहिए कि हमारे जो पहले के थे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने कितनी मुश्किलों से सबको एकता बनाकर रखी, सब में सबको कितने मतलब सबको कितने मुश्किलों से सबको एक साथ लाए, वो एकजुट करने में लगे हुए थे। और आज के लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा शिकायत करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे को कॉम्पिटिटर इतना ज्यादा मान लिए हैं कि उन्हें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते हैं। तो मैम इस चीज को थोड़ा बदलने की जरूरत है और हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे को हेल्प करें, उनके साथ खड़े रहें। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ रहें, उन्हें ज़रूरत पे हम काम आएँ। या दैट्स इट मैम। थैंक यू फॉर मैम। Thank you so much, Mona. Or you have given a very, very significant insight in this expression. आपने बताया कि किस तरह से हम एक ऐसे वातावरण में जा रहे हैं जहां हम एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर दिए हैं, है ना? जहां हमें एक दूसरे से कंपटीशन। आप ये देखिए, क्या गांधी जी ने किसी को कंपटीशन माना कभी? नहीं।
उसने कंपटीशन माना अपने सत्य से उसका संघर्ष था, अपने आप को, अपने सत्य को सामने रखना, बिना किसी के डर के, बिना किसी के खौफ के, और आगे आना, बात रखना किस तरह से। और वो बात जो वो रख रहे थे, वो उसका आधार कौन था? उसका आधार हम सब भारतवासी थे, हम सबका कल्याण था। So thank you, Mona, for sharing this with us. I would go ahead with next postcard from Nikita Rani. Nikita, I have made you the presenter. Over to you. Good evening, ma'am. Respected Gandhi ji. Ma'am, I am audible? Yes, you are audible, Nikita. Respected Gandhi ji, I am writing this postcard by remembering your inspirational quotes. Really, you are a great soul who make our lives so easy by fighting for our rights peacefully and unviolently. You are an inspirational figure for many people, including me. We follow the path made by you for our rights and also told others to follow your path. Remembering you, Nikita Rani, BA Geography Honours First Year, NSS Volunteer AM. Thank you. थैंक यू सो मच निकिता। आपने अपने पोस्ट कार्ड में एक बहुत प्यारा सा शब्द यूज किया है, अनवायलेंटली। निकिता सुन पा रहे हो? यस है ना? ये अनवायलेंटली या ये जो नॉन वायलेंस है, क्या है? व्हाट इज इट? क्या कहना चाहते थे गांधी जी इस पे? मैम, इस पे गांधी जी यही कहना चाहते थे कि हम लोगों को अगर कोई भी चीज हासिल करनी है तो उस पर जरूरी नहीं है कि हम लोगों को गुस्से से काम लेना है या किसी के भी मारपीट वगैरह लड़ाई झगड़ा करके कोई भी चीज, जैसे हमारे राइट्स के लिए लड़ रहे थे वो हमें इन चीजों से ही मिलेंगी। वो खाली पीसफुली बैठकर भी हम कर सकते हैं, जैसे वो धरने पे बैठा करते थे बिना किसी को कुछ कहे, बिना कुछ लड़े। उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया हमारे लिए। वेरी ट्रू। इसीलिए कहते भी है ना हम लोग सब, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। याद है आपको ये सॉन्ग? नो मैम, सॉन्ग तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जागृति फिल्म से ये सॉन्ग है। और ये गाना यदि आप सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आज हम उनको कितना मिस करते हैं। हमारी फ्यूचर जनरेशंस या हमें जो अब आगे करना है, उन सब प्रयासों में सिर्फ गांधी जी के कार्य हैं, उनके एफर्ट्स हैं जो कि हमें प्रकाश देते हैं। थैंक यू सो मच निकिता, indeed a very significant postcard. Muskan Solanki, are you there? No, ma'am. Okay, then I'll request Nikita और बुशरा, आप में से एक प्लीज मुस्कान के पोस्ट कार्ड को रीड करें हम सबके लिए। ओके मैम। मुस्कान सोलंकी, अदिति महाविद्यालय फर्स्ट ईयर। You change the world with your dhoti, your lathi, and your determination. You are no longer alive, but your memory and your messages lie deep within us. I wish people, including myself, could follow even 1% more of what you purchase. For this would make our lives worthwhile. In a way, I am glad you are no longer among us, as it would break your heart to see this state your beloved Bharat is in. But I do pray that someone like you could come along with teach us to be truthful to ourselves. मैम ये थोड़ी ब्लर दिख रही थी, बट ठीक है। ओके मुस्कान, थैंक्स फॉर रीडिंग इट। मुस्कान सोलंकी ने बहुत ही आज अपने सामाजिक आर्थिक हमारे जो दशा है अभी, उन सब को ध्यान में रखते हुए शी हैज वेरी नाइसली रिटर्न दैट
आज गांधी जी यदि होते हमारे बीच तो शायद उनका मन ज़रूर टूटता कि हम सब क्यों इतना कॉम्पिटिशन, हम सब क्यों इतना गुस्सा और हम सब क्यों इतने एक-दूसरे को दुःख देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट yes, Muskan has rightly written that Gandhiji's truth can speak a lot to ourselves. It teaches us कि आप धोती लाठी और डिटर्मिनेशन जो गांधी जी ने भी लिखा है कि इनडोमिटेबल विल, आपका डिटर्मिनेशन जो है वही आपका सच है, आप उसी को आप उसी को परस्यू कीजिए फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. थैंक यू मुस्कान. Moving ahead, on screen we can see a letter by Anushka Negi. Anushka, are you there? Please raise your hand if you are there. Yes, got it, Anushka. I'm making you presenter. There you are. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, Anushka, you Yes. are. Ma'am, this quote describe the strategy of non-violence actors. This shows Gandhiji's journey. First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. In this, it shows that how Gandhiji fight in a non-violence activities. He demand for Indians freedom, and British ignore him first. And this continue for days. But then, when Gandhiji still asked for demand for freedom, they can't ignore him, and they started to ridiculate him. They started to tease him. But Gandhiji doesn't get angry. He doesn't shout on them and still demand for India freedom. Then they get frustrated and they started to fight. Britishers fight Gandhiji but still can't beat him. Gandhiji still stick with his demand and make India freedom. That's how our India won, and that's how he shows that how we can win by non-violent act. This is how Gandhi ji teach us humanity and that we shouldn't fight. We should stick to our demands and uh, fight for freedom. Thank you. Thank you so much, Anushka. Anushka, was there any point in your life where you realized any thing you learned from Gandhiji helped you? Can you share any instance from your life? Yes, ma'am. Gandhiji teaches lot of things, and in previous postcard also we have seen most of examples like truthfulness, which also helped me in my life. And first, when I was child, I tends to speak lie, but I realized that it isn't really good to lie, and to hide one lie, we speak countless of lies, and after that, it won't be helpful. So this teach me that we should be truthful, and this is also what Gandhiji tells us. Very true, Anushka. And truth is at first, truth might hurt, okay? But later on, it is something which is going to strengthen you, give you that confidence to stand and speak for yourself. Thank you, Anushka, for sharing this. Moving on to our next postcard. This is by Nidhi. Nidhi, are you there? Yes, ma'am.
Nidhi is by what name? Ridhima? मैम निधि निधि के नाम से ही है, सारा कैप्स में नाम है उसका। Okay, let me check. Nidhi, please raise your hand. I guess I can't see Nidhi, but I would invite. She Ma'am, just Nidhi has raised her hand. Okay, okay, thank you. That's great. Because the ones who have returned it should be the ones who should. Yes, Nidhi, you are already in presenters list. Please go ahead. हाँ निधि, आप अपने आप को अनम्यूट कर कर अपना पोस्ट कार्ड पढ़ के सुना सकते हैं. Yes, Nidhi, please go ahead. I guess निधि अपना माइक को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो. Yes, you have just unmuted yourself. Now you can read it. Mahatma Gandhi was a great leader of India and one of my favorite leader. He was one of the most inspiring people on the earth. His life has inspired me in many ways. Gandhi was always simple and he believed that every person should do their own work when they are capable. This has inspired me to live a simple life and be independent. He is the real model for me. Thank you. थैंक यू निधि. निधि, गांधी जी की सिंप्लिसिटी से आप बहुत इंस्पायर्ड हो, हम सब भी. पर कुछ इंस्टांस शेयर करना चाहोगी अपनी लाइफ से कि कहाँ किस तरह से आप उनकी सिंप्लिसिटी को प्रैक्टिस करती हो या समझती हो या आगे प्रैक्टिस करना चाहती हो. Was I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I guess Nidhi would like to stop here. Nidhi, you can post in chat box also if you want. Moving ahead to next postcard. Yes, this is by Tanya Shukla. Tanya, are you there? Raise your hand. Ma'am, there are two Tanyas here. Yes, Tanya, I have just added you as a presenter. Now you can unmute yourself and talk. Good evening, everyone. Respected Mahatma Gandhi ji, a big thanks to you for the way you changed this world and sacrificed your whole life. You have made me appreciate the liberty I am experiencing and taught me that this is something I should cherish and safeguard always. You have made me recognize value of peace and truth. Thank you. Thank you so much, Tanya. Tanya, you have talked about liberty here. है ना? Can you Yes, ma'am. express yourself on that? Yes, ma'am. Actually, liberty in the sense we have got the freedom from the British, and Gandhiji helped us a lot for in this for getting the liberty from the Britishers. Because of Gandhiji, we all are now uh, living freely without any fear. We can do whatever we want, and also
she gives as a he gives as a message that we should fight for what we want until we didn't get it. Very true, तान्या. एंड इसी के साथ में वी शुड फाइट फॉर समथिंग विच इज ह्यूमैनिटेरियन. जो गांधी जी ने मानवता सिखाई है, जो उसको आगे लेकर जाना चाहे. फाइट करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है. We can fight for competition, we can fight for money, we can fight for anything. हम लोगों की जिद के लिए भी, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तब होगा जब हम उस मानवता को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करें. Very nicely written, Tanya. Thank you so much for sharing this postcard with us. Moving ahead, Thank you. we have a postcard from Snoya Naz. Snoya Naz, are you there? Raise your hand if you are there. Snoya Naz. I guess she's not there. I would request Bushra to please read her letter. Yes, ma'am. Snovia Naz, NSS volunteer, Aditi Mahavidyalaya. Uh, Non-violence is the best thing about to your father of nation as Gandhiji. He is the best freedom fighter and a leader too. He always in our heart with all respect and with his thoughts. Ma'am. Thank you so much. Yes, you are audible. Thank you so much, Snoya Nas, because very true, non-violence is something जो कि सिर्फ कहने के लिए नहीं है. I tried my best to practice it. It is so hard, but it has so much of impact. I'll share one instance with you. I was in a cab and ड्राइवर से किसी दूसरे गाड़ी को थोड़ा सा हिट हो गया. सो जो दूसरी गाड़ी से पर्सन थे वो उतरकर और ड्राइवर उतरकर एक दूसरे से लड़ने लगे. सो आई वाज standing there, and then I just pinched in between them and I prayed to them, please आप एक दूसरे को ऐसे हर्ट मत कीजिए. ऐसे करने से क्या मिलेगा. हम लोग प्यार से भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. तो ही सेड कि अगर ये मुझसे माफी मांगे तो मैं इनको माफ कर सकता हूँ और मैं हम लोग इस फाइट को बंद कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ड्राइवर आई folded my hands in front of that another person, that I am sorry on his behalf. He at that point of time, I don't know what happened. It was just like a magic that another person, he said कि नहीं बस यहीं पर खत्म करते हैं, आप भी मैम जाइए और हम लोग को भी we'll also go. So that way the whole scenario, जो कि जहाँ पर एक दूसरे से वो लड़ने के लिए रेडी थे, they were fighting, and अचानक से it all melted out. So uh, we need to practice it. It is really very hard. कई बार आपको इसमें आप खुद भी चोट खाएंगे, लेकिन यस, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ही व्यक्ति नहीं, आप पूरे समाज को हिंसा से बचा सकते हैं. Thank you, Snoya Nas, for writing this postcard. It was indeed very important. We'll move ahead. So we have another postcard. The name is not there. It is there. Kaveri. Kaveri, are you there? Please raise your hand if you are there. Thank you, Kaveri. I'm just making you presenter, and you are there. Over to you, Kaveri. Good evening, ma'am. Dear Gandhi ji, as we all know, today is Mahatma Gandhi Martyr Day. As I write about Gandhi beyond India, Gandhi had made an impact in other countries. He was a leader of peace and social justice and objected to war and violence as tool of injustice. Thank you, Babu, to make India independent. Lastly,
If we are to reach peace in the world, we all have to start with children who gave their today for our golden tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Kaveri. Thank you so much, Kaveri. Kaveri, what do you think? Why it has to start with children? Why it has to start? He in one of his notes has he mentioned that we should start with children. We should start with Yes, ma'am. education. Why do you Yes, think it is ma'am. important? मैम बिकॉज चिल्ड्रन से स्टार्ट करेंगे तो वो इनजस्टिस होगा बिकॉज नॉन वायलेंस हमें सिखाना चाहिए कि वो नॉन वायलेंस नहीं करे वायलेंट नहीं करे सॉरी मैम वायलेंट नहीं करे नॉन वायलेंस का साथ देंगे क्योंकि आजकल बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं बचपन से ही बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस बहुत चीज गेम भी बहुत ऐसा चीज आ रहा है दैट्स वाई मैम वायलेंस से ही बचपन से सिखाना चाहिए कि नॉन वायलेंट नहीं करें दैट्स माय व्यू मैम वायलेंस ना करें, नॉन वायलेंस करें. यस Thank you, मैम Kaveri. Yes, I think थैंक यू this is, मैम and you are very right. I would also request this to my volunteers as well. Please avoid playing the video games or the games which are violent in nature. Okay, this is going to have a very, I would say, a very bad psychological impact on you. It is going to make you more inhuman. So please avoid that, and please practice the things which are much more towards humanity, towards spirituality, like gardening, like the way, our principal ma'am, she is very concerned about the way our whole trees in our college, plants in our college, everything is there. So do humanitarian tasks, do volunteer work, shramdan karo, NGOs may, go and help people out. See the people who are there on road, help them out, think what you can do for them. So thank you, Kaveri, for sharing this vision with us. Moving ahead, थैंक यू सो मच we have Tanu. Tanu, are you there with us? Tanu, if you are there, please raise your hand. um, I think Tanu is not there. Then I would request Yashika to please read this postcard. श्योर मैम। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के 200 वर्षों की प्रधान पराधीनता के बाद आजादी दिलाई। इन्होंने भारत को एक आदर्श देश बनाने के लिए भारतीय समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह जैसे तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बराबरी का हक दिलाने का प्रयास किया। थैंक यू। Thank you, Tanu. Thank you, Yashika, for reading it out. Uh, Moving on to our next postcard. It is by Ankita. Ankita, are you there with us? Please raise your hand. I don't think Ankita is there. Is she there? No. Okay. I guess Ridhima, can you read this postcard? Sure, ma'am. Mohandas Karamchand Gandhi, also known as the father of the nation, the great freedom fighter and the great मैम आई कांट रीड दिस बिकॉज थोड़ा सा ब्लर है वहां से Okay. रिधिमा इट्स ओके, So मैं कर देती हूँ। Humanitarian. okay. Humanitarian. Okay. यस I मैम, मैम मैं रीड कर दूँ? हाँ बुशरा बेटा रीड कर दो.
Mohandas Karamchand Gandhi, also known as the father of nation, the great freedom fighter and a great humanitarian with a spiritual mind. He gave the true meaning of peace. Let's pay our tribute to the Mr. of non-violence and tape leadership in creating better poet in India to build a best India. He was the person who taught the world the lesson of non-violence. Thank you, Bushra. Indeed, a very important postcard where she has said that he was the Masiha of non-violence, who took leadership in creating better quality in India to build the best India. And I'm sure we are going to learn a lot from you, Ankita. Then we have Shipra. Shipra has written this letter from Bihar, Patna. Shipra, are you there? Please raise your hand if you are there. Oh my gosh, I guess she's not. Okay. Then I will read this out for Shipra. Shipra said, Dear Gandhiji, you changed the world with your dhoti, your lathi, and your determination. You are no longer alive, but your memories and your message lie deep within us. I wish people, including myself, could follow even 1% of what you preached, for this would make our lives worthwhile. The country today is definitely the one we wished for, but but hope is not lost. My personal message to Gandhiji would be to thank him for just giving this country, but the entire world, the Gandhian philosophy. We need you, Gandhiji. Your nation is very proud. That's because of you. So this was by Shipra from Bihar. Thank you so much, Shipra, for sharing this postcard with us. Now over to Nisha. Thank you so much, ma'am, and all the volunteers who presented their postcards. All the postcards are amazing. Now, I would like to call Miss Bushra to present a poem. Thank you, Nisha. धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उन्होंने, न बंदूक चलाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। इसी के साथ मैं कविता की पंक्ति आप सभी के सामने पेश करती हूँ। ये राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा बापू तेरे उपकार का, तू लाल भारत भूमि का आदर्श बना संसार का। वृद्ध वयस्क और दुर्बल काया, कोई ऐसी तो बात थी, हुंकार भरा जब जब तूने, जनता तेरे साथ थी। नाव बना जन समूह का, तू उसका पतवार था, तू लाल भारत भूमि का आदर्श बना संसार का। सत्य को अस्त्र बनाया तूने, अहिंसा तेरा शस्त्र बना। क्या ऐसी क्या घुटी पिला दी तूने, तेरे पीछे सहस्त्र चला। नींव हिला दी तूने बापू गोरी सरकार की, तू लाल भारत भूमि का आदर्श बना संसार का। तेरी नीति तेरी शिक्षा अद्भुत थी अपरंपार थी, तूने कर्ज अदा किया मातृभूमि के प्यार की। जन जन का प्राण आत्मा महान, हे राष्ट्र तुझे पुकारता, तू लाल भारत भूमि का आदर्श बना संसार का। इसी के साथ मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी विराम देना चाहूंगी। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। धन्यवाद। Thank you so much, Bushra. It was wonderful. Ma'am, at last, our one of the volunteer also want to present a poem. Yes, please go ahead. Isha, over to you. Good evening, ma'am, and all present here. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are. तो मैम मैं एक पोयम प्रेजेंट करना चाहूंगी जो गांधी जी के लिए है। तो कुछ वो इस प्रकार है। माँ, खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा।
निक्कर नहीं, धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, कभी किसी से नहीं लड़ूंगा और किसी से नहीं डरूंगा, झूठ कभी भी नहीं खाऊंगा, सदा सत्य की जय बोलूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रुई की बोनी दे दो, चरखा खूब चलाऊंगा, गांव में जाकर वहीं रहूंगा, काम देश का सदा करूंगा, सबसे हंस हंस बात करूंगा, क्रोध किसी पर नहीं करूंगा, माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। थैंक यू मैम। Thank you so Thank much, you so Nisha. much, Nisha. It was amazing. Now I would like to call Anjali for vote of thanks. Oh, just a second, Anjali. Before that, I would request all of you to please switch on your video so that we can have a group photo together. All of you, please switch on your videos. Uh, I'm requesting all of you, please switch on your videos. Not all videos are visible here. Thank you so much for sharing the video. Now you can go ahead. Now I would like to call Anjali for vote of thanks. Before Anjali, I guess I have just got a message from Bhavna Upadhyay that her postcard was not there. Uh, may I request Bhavna to please share her postcard on the screen? Anybody whose postcard is left, please raise your hands. I'll request them to please share it on the screen. Yes, ma'am. मैम मुझे इसमें शेयर नहीं करना आ रहा। Uh, uh, कौन एक बार raise your hand who is speaking, Bhavna? Yes, ma'am. Okay, then you can share on Telegram group. मैं जल्दी से share कर देती हूँ। मैम मैंने देखो कर रखा है शेयर पहले भी। बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप में हो ना, एक बार वहां शेयर करो। वहां पे तो मैम यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा आप टेलीग्राम मैम वहाँ पे ओनली एडमिन मैसेज कर सकते हैं। ओके भावना, देन जस्ट अ सेकेंड आई टेल यू। आप प्रेजेंटर हो ना भावना, अभी बोल पा रहे हो है ना? यहाँ पर एक सिंबल होगा जहाँ पर एक ऊपर की तरफ एरो वाला सिंबल है। शेयर शेयर करके लिखा होगा। आप थ्री डॉट है ना, वहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। हाँ मिल गया मिल गया ना? हाँ ठीक है, हम लोग नए हैं इस पे, हम सब सीखेंगे धीरे धीरे। हो पा रहा है भावना? भावना शेयर स्क्रीन को पहले अलाउ करो, ठीक है? उसके बाद फिर स्क्रीन आपकी शेयर हो पाएगी। अलाउ कहाँ से करूँ? मैम मेरे को आ नहीं रहा है एक्चुअली। भावना आप ग्रुप के किसी भी एडमिन के पास शेयर कर दो। किसी भी एडमिन पर शेयर कर दो ग्रुप पर। एक सेकंड, पर थोड़ा जल्दी करो अभी। मैं एक सेकंड। हाँ, किसी भी एडमिन के पास शेयर कर दो।
बेटा आपने किसी को भी रिसीव हो भावना का पोस्ट कार्ड तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें और मुझे बताएं कि मैम ओपन सेटिंग करना हटा दिया है, वो मैसेज कर सकती है ग्रुप पे। ओके मैं कर रही हूँ। हाँ भावना थोड़ा जल्दी करो। अपार्ट फ्रॉम भावना और किसका रह गया है, प्लीज रेज योर हैंड्स, आई कैन सी फ्यू हैंड्स आउट देयर। अंजलि, अंजलि आई गेस वी हैव शेयर्ड योर्स। No, ma'am. Okay, Anjali, do you have yours? Yes, ma'am. Okay, then you can present it. Okay, ma'am. हम्म। तब तक भावना हमसे शेयर कर लेगी, अभी आप प्रेजेंट करो। मैम कर दिया। Okay, Bhavna, thanks. Anjali, you can share your screen with us. Yes, ma'am. मैम शेयर नहीं हो पा रहा। In that case, आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और वहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी को भी जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं वो लोग में से कोई भी एक शेयर कर दे। बुशरा, यस मैम। बेटा आप शेयर कर सकते हो? यस मैम, लेकिन मैम पहले ग्रुप पे डाल दे वो, उसके बाद। हाँ प्लीज ग्रुप पर डाल दीजिए। भावना और अंजलि आप दोनों मैम डाल पे। डाल दिया है ग्रुप पर। बेटा आई हैव शेयर्ड शगुफ्ता खातून्स पोस्ट कार्ड टू गांधी जी ऑन स्क्रीन। इसमें गांधी जी ने सफाई पर जो जोर दिया था उसी के बारे में बात कर रही है शगुफ्ता। और उन्होंने अहिंसा का पालन करना जो उनका अहिंसा का पालन करने के लिए उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया था उसके बारे में बात कर रही हैं। तो शी सेड कि मैं किसी को भी गंदे पैरों के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। सो आत्मा और मन जो था उसकी स्वच्छता और उसकी स्वच्छता की जो प्रैक्टिस है हमारे एफर्ट्स में उसकी बात शगुफ्ता यहाँ पर कर रही हैं। अहिंसा उसी को कहते हैं। थैंक यू शगुफ्ता फॉर शेयरिंग दिस पोस्ट कार्ड विद अस एंड देन वी हैव जस्ट अ सेकेंड। Ma'am, Anjali has also shared her postcard. Okay, just a second, I am stopping my screen, then Anjali can share. Ma'am, I'm sharing that postcard. Just a हाँ second. प्लीज, हाँ प्लीज शेयर, प्लीज शेयर।
Ma'am, my screen is sharing. Yes, ma'am. Yes. The greatness The of humanity is not in being human, but in being human. Dear Bapu, you are the person who gave us freedom with your brilliant mind, and I salute that you started the many strikes and started the norms to avoid untouchability. You made our India as a secular state, but I am sad to say that the old things will disappear nowadays. May you will be here and guide us as our guardian, and we learn from you to do the work without violence, have to say truth always, being be in a path of truth, never to be lie, and don't take the step backs. We have to do work as do or die. Thank you so much, Bapu. Thanks a lot, Anjali. Indeed, a very beautiful message that reflects the contemporary. Anjali, would you like to talk something about your life and Gandhi? Yes, ma'am. In my past, there are many things which has gone. Uh, at my family also, my grandma and all were saying lie, and that makes my family divided. And uh, in being a truth, in a being a part of a truth, my mother has taken the many struggles and gave me the chance to came here and talk about many things and give me some knowledge that makes me that my mother and my and the Gandhiji were both are similar in my eyes. Thank you so much, Anjali, for sharing this. It's indeed very important. Very, very important. Thank you, Anjali. Over to Bhavna. Yes, ma'am. भावना आपका मैसेज जो है वो टेलीग्राम पर शेयर किया है आपने ऑफिस बेयरर्स टेलीग्राम प्लीज ग्रुप पे भावना का कर दिया मैंने ग्रुप पे शेयर। बेटा ग्रुप पर शेयर किया है तो ऑफिस बेयरर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज स्विच ऑन दैट इमेज मैसेज शेयर इट मैम ग्रुप पर तो नहीं आया। भावना आपने कौन से ग्रुप पे किया है? नेम बताना एक बार। एनएसएस का है, एनएसएस पे किया है। एक बार मैं शेयर करके देखती हूँ तो एक सेकंड। तो मैम मेरी शेयर स्क्रीन हो रही है? नहीं भावना आप एक काम कर सकते हो आप ग्रुप के किसी भी एक एडमिन को ना वो यस इमेज मैम। भेज सकते हो ग्रुप के एडमिन को इमेज भेज दो हम प्रेरणा दी को भेज दूं क्योंकि उनका हाँ ही नंबर प्लीज है। हाँ प्लीज हाँ प्लीज जल्दी से भेजो जल्दी से भेजो आफ्टर दिस आई गेस निकिता आपका भी एक पोस्ट कार्ड था जो मुझे अभी दिखा है निकिता इन ऑफिस बेयरर्स Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू शेयर इट No, ma'am. Actually, there is a mistake in that card. ऑफिस बेयरर्स किसी को भी प्रेरणा आपको रिसीव हुआ है भावना का इमेज पोस्ट कार्ड कर दिया, कर दिया। ओके प्रेरणा हैव यू रिसीव्ड इट
Yes, Bushra, we can see the message which you have just shared. uh, मैम मैं इसको रीड करूँ? हाँ भावना, भावना रीड कर सकती हूँ? यस यस मैम। प्लीज, यस प्लीज। अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा मत करो और हमेशा सत्य का साथ दो और कभी गलत मत करो। हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें सही का साथ देना चाहिए। मैम थैंक यू भावना। भावना, कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है, कभी सच का साथ देना किस तरह से होता है, कभी कोई एक्सपीरियंस अपने जीवन का? मैम हमें को हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Very true, Bhavna. Bhavna, thank you for sharing this postcard with us. It was very, very different and very unique in itself. Thank you so much for sharing. I guess हम सबके पोस्ट कार्ड शेयर हो गए हैं। अब इसके बाद ओवर टू निशा for vote of thanks. Thank you so much, everyone. Now, I would like to call Anjali for vote of thanks. एक सेकंड। सभी को शुभ संध्या। मैं बीए प्रोग्राम द्वितीय वर्ष से अंजलि डी, एनएसएस स्वयं सेवक हूँ। मुझे आज के सत्र के लिए धन्यवाद प्रस्ताव देने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सुना रही हूँ तुम्हें दास्तां गांधी की, जमाने भर से निराली है शान गांधी की। रहे रहे ना रहे इसमें जान गांधी की, ना रुक सकी ना रुकेगी जबान गांधी की। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे आज के सभी एनएसएस वॉलेंटियर्स का। गांधी मित्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी वॉलेंटियर्स ने पोस्टकार्ड को लिखते हुए गांधी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मैं एनएसएस की टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहीद दिवस पर इस संवाद सत्र के आयोजन की अनुमति देने के लिए हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर ममता शर्मा महोदय को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे प्रिय डॉक्टर माली देवी सावरिया महोदय को उन्हें उनके मार्गदर्शन और नैतिक समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को आपका धन्यवाद देने और सभी एनएसएस कार्यक्रमों के भाग लेने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Anjali, for this precious vote of thanks. Uh, we should always remember, Gandhiji has said, Earth provides us enough to satisfy every man's need, but not everyone's greed. Okay? So let's not be greedy, let's be human and work on what Gandhi wanted us to build a strong India. Okay? Thank you, everyone, for being present in this postcard presentation. I hope all of you learned a lot through this. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Please fill the feedback form. We have shared it in the chat box. Okay, everyone, please fill the feedback form. And then just let me know when I can close this session, office bearers. Prerna, we can close the YouTube live now.